frequency will remains same. There will be no change. Frequency कभी change ही नहीं होता. That's only depends on the vibrations of the source. Second one, wavelength, because the medium is same and reflected light. क्योंकि reflected light में आपका हुआ क्या? Let us consider I have this one as a surface and a light fall on that surface and get reflected back in the same medium. This is your normal. So हम लोग को मालूम है कि मेरा जो वेवलेंथ है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा सेम है, सेम मीडियम है. सो अगेन देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ, नो चेंज इन वेवलेंथ because of same medium, because of same medium. Similarly, let's go with the third one, speed. Again, speed is also inversely proportional to your refractive index, but the medium is same, so there will be no change in speed also. Speed, again, medium is same. But let's go with the refraction. So in the case of refraction, frequency will not change because frequency doesn't depends on the medium, so frequency will not change, not depends on the medium or refractive index. Okay, not depend on medium. But in the case of wavelength, there will be change because lambda 1 divided by lambda 2 will be your n2 by n1, inversely proportional. So I have to find the lambda 2. So therefore lambda 2, that is your in second medium, will be your n1 times of lambda 1 divided by lambda 2. Now according to question, the second medium is or the change medium is of refractive index 1.33 और previous जो था वो air था, right? So 1 into 589 nm जो कि initial है divided by 1.33. So इसको find करेंगे and that will be your answer. सेम केस होगा मेरा इसके साथ, v1 divided by v2 is equal to n2 divided by n1, right? और in second medium I will get v2 is equal to v1 times n1 divided by n2. v1 मेरा air है, that is your speed of light, तो 3 is to 10 to the power 8 into 1 divided by 1.33. So इसका आंसर फाइंड कर लेंगे. इजी क्वेश्चन. सो द रिफ्लेक्टेड में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, बट रिफ्लेक्शंस में देयर विल बी चेंज बिकॉज वो मेरा मीडियम पे डिपेंड करता है. Similarly, what is the shape of the wavefront each of the following cases? So first case अगर मैं जाऊं, so in the case of first one, light diverging from a point source. So point source के कारण जब भी आपको मिलेगा वो एक लीनियर वेवफ्रंट मिलेगी, सॉरी प्लेनर वेवफ्रंट आपको मिलेगी. लाइट जो होगा मेरा लीनियर होगा और मुझे जो मिलेगी प्लेनर वेवफ्रंट मिलेगी फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. ओके, सो फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स रेज जो होगी वो सीधी सीधी आएगी और मुझे वेवफ्रंट लीनियर मिलेगी. सिमिलरली लाइट इमर्जिंग ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस. ओके, सो ये दो फिगर हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से मेरा बनता है. सो याद रखिएगा जब वो कॉन्वेक्स हो तो आपको लेंस भी कॉन्वेक्स वेव फ्रंट ही मिलेगा.
Similarly, the portion of wavefront of light from a distant star, okay, so infinite है, इसके कारण से मुझे planar wavefront मिलेगी. That is the case. Okay, so these two cases. आज हम लोग देखेंगे that is your position of fringe from the central maxima. Okay, so what is the position of fringe from the central maxima? So let's go with the position of fringe from the central maxima in Young's double slit experiment. तो मुझे जो देखना है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही देखना है. तो जस्ट हम लोग जाते हैं. सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था उससे हम लोग इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते थे कि आखिर हम लोग का इंटरफेरेंस कैसे होता है, और उससे हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते थे. सिमिलरली अब मुझे जो प्रूफ करना है वो, अब मुझे जो देखना है अब वो ये देखना है कि उसकी पोजीशंस कहाँ होगी, यानी मुझे पोजीशंस फाइंड करना है. सो लेट अस हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ योर फ्रिंज फ्रॉम योर सेंट्रल मैक्सिमा. सो लेट अस कंसीडर सेम कॉन्सेप्ट में जाऊंगा जो हम लोग पहले यूज करते थे, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो स्लिट्स था और उन दो स्लिट्स से हम लोगों ने एक वेव को, दो वेव्स को एक पॉइंट पे इंटरफेयर करके देखा था. अगर दोनों का पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो मुझे जो मिलता था वो डार्क फ्रिंज मिलता था. दूसरा केस हम लोगों ने यह भी देखा था कि आपका पाथ डिफरेंस के बेसिस पे आपका फेज भी डिफर कर सकता है, और वो रिलेशंस होती है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट द फ्रिंज एंड ऑल्सो टू गेट द इंटेंसिटी, जहाँ पे आपका फेज डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो देखेंगे आगे. फर्स्ट लेट्स फाइंड द पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, कि ठीक है अगर मुझे एक ब्राइट फ्रिंज मिली है या एक डार्क फ्रिंज अगर मुझे मिली है तो वो डार्क फ्रिंज का पोजीशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे होगा. ओके, सो लेट अस कंसीडर सेम केस में जा रहा हूँ. यहाँ पे मेरे पास दो स्लिट्स है which is nothing but your disturbance, okay, obstacles, or that this is your central maxima. So that this is the central maxima. Okay, so central maxima, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा स्क्रीन है. So that this is the screen, okay, which is placed at a distance of d from the slits. Okay, so ये distance this पे placed है. Now let एक point है मेरा P, this is the point P, जहाँ पे दो वेव्स इंटरफेयर किए हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि ये मेरा ब्राइट है या डार्क है, बट लेट देयर टू वेव्स इंटरफेयर विथ ईच अदर. ये फिगर हम लोग पहले भी देख चुके हैं. अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द पोजीशन, सो दिस वन इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पे मुझे पोजीशन फाइंड करना है. ओके, सो मैं करूँगा क्या, ये तो मुझे मालूम है कि अगर ये मेरा स्लिट्स है where separation distance of slits is d, so d is your separation distance of slits. So this is your separation distance between the slits. Okay, and this is your screen position, screen distance from slits, राइट. सो ये सब हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लिए. अब हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज द पोजीशन. सो टू फाइंड द पोजीशन मैं ना तो स्लिट S1 से फाइंड करूंगा और ना ही मैं स्लिट S2 से फाइंड करूंगा. हम लोग जो पोजीशन फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. सो यहाँ पे एक और फिगर मैं बनाऊंगा. ओके, एंड लेट दिस वन वाज योर सेंट्रल मैक्सिमा.
और ये जो मेरा पॉइंट P है जहां पे दो वेव्स मेरे इंटरफेयर किए हैं वो सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ एंगल पे है. दैट एंगल इज योर थीटा. ओके, वो सेंट्रल मैक्सिमा से थीटा एंगल पे है. और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट दिस इज द पोजीशन ऑफ द फ्रिंज. इट मे बी योर डार्क फ्रिंज और इट मे बी योर ब्राइट फ्रिंज, बट लेट दिस वन इज योर पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ एन. कोई मेरा एन ऑर्डर फ्रिंज है जो मुझे पी पॉइंट पे मिला है और वो सेंट्रल मैक्सिमा से एक्स एन डिस्टेंस पे है. ओके, so this is from x and distance. So this is your central maxima where n is equal to 0. Okay, and this point is your n, right? So this is your CM, central maxima, right? So अब मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ ट्रायंगल और मुझे यहाँ पे x ऑफ n का वैल्यू निकालना है. सो मैं tan थीटा यूज कर सकता हूँ. सो फ्रॉम द ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा. थीटा इज योर इंक्लाइंड एंगल is nothing but your x of n divided by d, where x of n is the positions of the fringe. Position of fringe from central maxima. Okay, so position of fringe from central maxima. So this is my equation. ये मेरा इक्वेशन है, मुझे x of n का वैल्यू निकालना है. नाउ अब यहाँ पे मेरा ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है और यहाँ पे मेरा डार्क फ्रिंज भी हो सकता है. सो लेट्स गो फॉर ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट. So position of bright fringe. Position of bright fringe. तो पहले ही मैंने बताया व्हाट इज योर फ्रिंज. तो फ्रिंज इज द पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट लाइट. सो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज. सो अगर मैं ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालना चाहता हूँ, ओके, लेट्स आई हैव टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज. सो इसमें मैं देख चुका हूँ in the case of bright fringe the path difference between the rays, okay, or the waves must be is equal to n lambda, integer multiple of lambda. Okay, so I will use the same equation. So to get a bright fringe, the path difference be equal to the integer multiple of lambda, right? ये सेम कंडीशंस है जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो इस कंडीशंस को याद रखिएगा. सो ये दो कंडीशंस यहाँ पे मैंने बताया था जो कि यंग्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे. सो दिस वाज योर टू, या दिस वन. Okay, so path length difference or path difference, okay, must be your integer multiple of lambda. Okay, so path difference must be your integer multiple of lambda and path difference must be your odd multiple of lambda by 2. So इस केस में मेरा जो path difference होगा must be your integer multiple of lambda. Okay, so direct लिख रहा हूँ, you can follow the above equation. So मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ that is d sin theta, that was your path difference n lambda. So sin theta must be is equal to n lambda by 2. Sorry, n lambda by d. D is your slit positions. But here theta is very small. So ऊपर वाला थीटा और इस इक्वेशंस में जो मैंने थीटा यूज किया इस फिगर में दोनों थीटा मेरा सेम है. So but theta is very small, therefore मैं sin थीटा को approximately equal to लिख सकता हूँ tan theta, which is your n lambda by d, or n lambda by d must be is equal to x of n divided by d. Okay, so this is the main equation
और ये मेरा जो है वो फॉर ब्राइट फ्रिंज का इक्वेशन है, राइट। सो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ पे कंबाइन किया तो मुझे मिलेगा ए। सो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ व्हाट इज योर x of n. So x of n is equal to n lambda capital D divided by small d. So this is the position of n bright fringe from the central maxima. So position of bright fringe from central maxima, right, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. So this is for nth order bright fringe. Okay, yeah, this is for nth bright fringe. Nth bright fringe. Similarly, अगर मैं बात करूं आपका positions of dark fringe, so that will be the same. यहाँ पे केवल मेरा थोड़ा सा चेंजिंग होगा, मगर सारा पैरामीटर फिर से मेरा सेम होगा। ओके, सो दो इक्वेशंस मेरे सेम होंगे, बट there will be matter change. So let's go with positions of dark fringe. And the position of dark fringe is so for dark fringe, or to get a dark fringe, the path difference or path length difference so फिर से आप ऊपर फॉलो कर सकते हैं, be equal to odd multiple of lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, that is d sine theta must be is equal to n plus 1 by 2 lambda or 2n plus 1 lambda by 2, दोनों मेरे सेम है, राइट, और 2n plus 1, सो ये एक ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई दे देगा, lambda by 2, right. Or similarly, because theta is very small, so from the central maxima. So now let's go with fringe width, that is the difference between two fringe. Fringe width. ओके, कभी कभी ये एंगुलर भी आपको दे देता है, एंगुलर भी आपको पूछ देता है कि एंगल में कितना का डिफरेंस रहेगा। ओके, सो देखते हैं। सो नेक्स्ट गो विद द फ्रिंज विड्थ। ओके, बीटा। So what is the fringe width? So fringe width is nothing but your difference between two fringes. It may be your dark or it may be your bright, okay, but it will be your continuous, right. So मेरे पास अगर continuous है, continuous dark fringe है या continuous bright fringe है, और इन दोनों के बीच में अगर मुझे डिफरेंस चाहिए, ओके, सो मैं यूज करूंगा दिस वन, फ्रिंज विड्थ. So fringe width is a difference between the two continuous dark fringe or bright fringe. Okay. So the difference between the two continuous bright fringe. Yeah, two continuous fringes. It may be your dark or bright.
डार्क और ब्राइट। और ओके, सो ये दो फ्रिंजेस के बीच में जो आपका डिफरेंस होगा दैट इज योर डार्क और ब्राइट फ्रिंज। ओके, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे दो तरह का डिफरेंस हम लोग मोस्टली देखते हैं, या तो ये हो सकता है आपका एंगल के फॉर्म में, या हो सकता है आपका मीटर के फॉर्म में। ओके, सो या रेडियन के फॉर्म में और नहीं तो मीटर के फॉर्म में। सो देखते हैं दोनों को कि इसके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। सो अगर मैं बात करूं, ओके, सो आई थिंक डिफरेंस बिटवीन टू, अगर मैं इसको कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस लिखूं तो थोड़ा इजी होगा समझने में। ओके, सो दैट इज योर, जो एक के बाद आ रहा। ओके, सो इज योर फ्रिंज विड्थ। सो फ्रिंज विड्थ आपका एंगुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। ओके, सो इसको नोट में डाल देता हूँ, तो कभी कभी ये एंगुलर भी पूछ सकता है। सो दोनों एक ही जैसा है। सो फ्रिंज विड्थ या बीटा कैन बी लीनियर और एंगुलर। सो मोस्टली एंगुलर जब रहेगा तो वो रेडियन में आपका रहेगा, वो छोटी सी वैल्यू रहेगी, राइट, नॉट इन डिग्री। अगर डिग्री में भी रहा सो नो प्रॉब्लम, सो इट विल बी एंगुलर सिंपली। क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी तरह से मिक्स कर देते हैं, कभी कभी उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, कभी डिग्री में ही छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे अगर रेडियन लिखूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो सिंपली लेट्स गो विथ बीटा कैन बी लीनियर और एंगुलर, ये दोनों हो सकता है। सो सबसे पहले मैं फ्रिंज विड्थ फाइंड करता हूँ फॉर ब्राइट फ्रिंज। सो फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज, बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज। Fringe. So first of all, let's save it. Okay, so beta for bright fringe. So मुझे दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस देखना है, तो मैं बोल सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू, लेट वन इज एट n plus 1, second one is our x of n. So these are two. Okay, so ये इक्वेशन मैं ऊपर ही यूज कर लेता हूँ। Okay, so here beta is your x of n plus 1 minus x of n. Okay, so मैंने एक n plus 1th फ्रिंज फाइंड करूंगा, एक एक्स ऑफ एन nth फ्रिंज फाइंड कर, दोनों के बीच में जो मेरा डिफरेंस होगा दैट योर फ्रिंज विड्थ, राइट। सो हम लोग को इक्वेशंस मालूम है, उसी इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करेंगे। सो फॉर ब्राइट फ्रिंज हम लोग को मालूम है कि एक्स ऑफ एन जो होता है वो अभी हम लोगों ने निकाला है, दैट इज योर n lambda d divided by d. So that is your n lambda d divided by small d. ओके, एंड सिमिलरली एक्स ऑफ एन प्लस जो हो जाएगा, यानी जस्ट उसके ऊपर वाली पार्ट, तो दिस वन विल बी n plus 1 lambda capital D divided by D. ओके, सो कहने का मतलब क्या है, लेट अस कंसीडर कि ये मेरा स्क्रीन है एंड दिस इज योर प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमा, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि एक जो मेरा फ्रिंज मिला है वो यहाँ पे मिला है विच इज योर एक्स ऑफ एन, और दूसरा जो फ्रिंज मुझे मिला है वो यहाँ पे मिला है जो कि कंसेक्यूटिव है। let this is x of n plus 1, राइट, दिस इज x of n, दिस इज x plus 1। मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये जो आपकी डिफरेंस है that is your linear difference, this is your beta। Okay, so beta can be linear or it can be your angular, so this is also your beta, but this is your angular, and this one is your linear, right, linear। Okay, so मुझे इसको फाइंड करना है, या तो बीटा एंगुलर नहीं तो बीटा इन
लीनियर, राइट। सो लीनियर, जब आप ये डिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो ये लीनियर हो जाएगा। जब दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस फाइंड करेंगे, ओके, सो ये एंगुलर हो जाएगा। तो मुझे ये डिस्टेंस को फाइंड करना है और ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा लाइन है। ओके, सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देना है, वेरी सिंपल। सो बीटा इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस वन माइनस एक्स ऑफ एन। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज lambda d divided by d माइनस n lambda कैपिटल D डिवाइडेड बाई d। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे n प्लस वन है, सो आपको मिलेगा n lambda d डिवाइडेड बाई स्मॉल d प्लस lambda d डिवाइडेड बाई स्मॉल d माइनस n lambda सॉरी कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो योर फ्रिंज विड्थ और बीटा is lambda d divided by small d, right? So this is the case. So this is your fringe width, right? Does not depends on n। आप किसी भी दो consecutive fringe के बीच में निकालेंगे डिस्टेंस, तो आपका इतना ही आएगा, lambda d divided by small d। lambda is your wavelength, d is your screen position, and small d is your fringe, sorry, slit difference, yeah, slit between the difference between the two slits, right? So in meter, so ये सारे मेरे terms है, lambda d divided by small d। So this is called as the fringe width for bright fringe। Similarly, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूँ, सो मुझे ये मालूम है कि दो ब्राइट के बीच में मेरे दो डार्क आते हैं, राइट। दो ब्राइट के बीच में मेरा एक डार्क आता है। तो अगर मुझे दो डार्क के बीच में अगर फ्रिंज विड्थ निकालना हो, सो फ्रिंज विड्थ between dark fringes, so this one is beta for bright fringes। Similarly, beta for dark fringes, so beta for dark fringes। so लॉजिकली अगर हम लोग सोचें तो हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस कंसीडर ये मेरा स्क्रीन है और ये मेरी जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा लाइन है, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक पहला ब्राइट मिला है, यहाँ पे मुझे दूसरा ब्राइट मिला है, राइट। सो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड किया। सो इन दोनों के बीच में जो हम लोग का लीनियर डिफरेंस आया, वो आया आपका बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब किसी ने पूछा कि नहीं, आप डार्क के बीच में निकालो, लेट अस कंसीडर दिस इज योर डार्क एंड दिस इज माय सेकंड डार्क, ओके। अब मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है कि व्हाट इज द डिफरेंस। सो दिस इज द डार्क, दिस इज योर डार्क, ओके। सो इन दोनों के बीच में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस। सो लॉजिकली है, जब दो ब्राइट के बीच में मेरा लैम्डा डी बाई डी है, सो दो डार्क के बीच में भी जो मेरा बीटा आएगा वो सेम ही आ जाएगा, दैट इज योर लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ओके। सो आप डार्क के बीच में देखें या ब्राइट के बीच में देखें, आपको फ्रिंजेस भी सेम मिलता है। तो दिस वन वाज योर ब्राइट, ओके, एंड दिस इज फॉर डार्क। सो आपको फ्रिंज विड्थ जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, ओके, दो ब्राइट के बीच में या दो डार्क के बीच में। बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे फॉर डार्क फ्रिंज एक्स ऑफ एन फाइंड किए हुए हैं, वो था हम लोग का 2n प्लस वन डी बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d। सो दिस वन इज 2n प्लस वन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d स्मॉल d। सो उसी तरह से एक्स ऑफ एन प्लस वन फाइंड करूंगा तो n के जगह मेरा हो जाएगा n प्लस वन, ओके। सो दिस वाज n प्लस वन लैम्डा d, ओके। यहाँ पे दो है तो एक और n प्लस वन है, देन प्लस वन। सो n के जगह मैंने n प्लस वन को रिप्लेस किया और वन पहले ही से यहाँ पे है, ओके। देन लैम्डा d डिवाइडेड बाय योर 2d,
दिस इज द इक्वेशन। ओके, और अगर आप डिफरेंस निकालेंगे सो यू विल गेट द सेम आंसर। आप इसको घर पे कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। सो डार्क फ्रिंज देखें या ब्राइट फ्रिंज देखें, आपको लैम्डा का वैल्यू सेम आता है। ओके, सो बीटा फॉर डार्क फ्रिंज। बीटा आपका एंगुलर भी हो सकता है और ये आपका लीनियर भी हो सकता है। सो दिस इज द टू इक्वेशन। One is your positions of bright fringe, which is your n lambda d divided by d. Then positions of your dark fringe 2n plus 1 d lambda divided by 2d. आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसमें। ओके, और अगर मुझे फ्रिंज विथ पूछे तो ये एंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है, लेकिन इसका इक्वेशन आता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ओके, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। डार्क का भी उतना ही होगा और ब्राइट का भी उतना ही होगा। ओके, so fringe width for dark and bright are same. So fringe beta for dark and bright are equal.